Good morning. Yeah, as it is always a pleasure to talk about education to educationists, to teachers. Teaching is not something natural. It doesn't mean it's unnatural. It means it's not something natural. Learning is something natural. I want your attention. Teaching is not something natural. Learning is something natural. What I am telling is like this. Wanting to eat is something natural. If you don't have breakfast, you will feel hungry by lunch, and the pangs of hunger would come if you are not taken anything by the evening. That is natural. The demand comes automatically. You don't need to go after it. Teaching doesn't belong to that category. Similarly, a horse, it's not natural for a horse to have a rider. It's not natural. You have to break the horse. You have to saddle it. First thing it wants to do is throw the rider from its back. Then slowly he gets used to it because of the love and affection they give, and he feels that somebody who is wanting to good to me is sitting on my back. It's not natural. But the horse becomes the best friend of the man who has taught him how to accept him. I'm coming to your part also. Just you might be understanding what I'm trying to say. Teaching is not natural again. It has to come from our idea of learning. It's born out of learning. And learning is something totally natural. As has been already referred to, we learn our mother tongue without any difficulty at all. Just as we consume food, milk, slowly the words as if it's coming out of the milk that we start catching, and at the peak of our learning of words, they say when the child is around maybe 2 years, they start picking a word in 4 hours and learn all the uses of it. All the uses of it. There is a universal theory of language which says that we are hardwired with the ability to learn. Now the big question is this: if we are able to learn, how should our learning be from which the birth of our teaching career will start? If we are like the natural learners of the mother tongue, slowly as we come into school, the speed of learning goes down. It becomes an exercise which looks totally irrelevant to the child. Totally irrelevant to the child. Here it is that the teachers make the difference. While learning, you feel that there is a particular way you would like to absorb a particular subject. After trying a lot of ways which your training gives you, you will find an optimum way for you to get to the crux of that topic which you want to teach the child. So now you have learned to learn the subject. This process of learning makes you a teacher automatically. It's a reflection. Teaching is a reflection. It doesn't have anything original to it. And as long as you want to become a teacher without looking at the main thing, which teaching is a shadow of, you will be someone who doesn't know what to do, because you can't create a shadow without an object. Getting what I'm telling you? So be conscious of the object of learning. सीखना है, सीखना है, सीखना है, और बगैर सीखे सिखाना impossible है. वो तो बच्चा किताब से भी रट ले सकता. It can be rote learning. Where is the requirement of a teacher? The teacher becomes like somebody forcing the student to study.
And that is not what you want to do as a learner yourself. As a learner yourself, you want to basically absorb the way you feel best it is for you to absorb, depending upon your own interests. So now when you want to teach, you have to know what is the learning interest of the child, not what you know. It is the learning interest of the child which your experience will come close to, and then the child will enter your world of learning. और करो, सोचो. The child will enter your world of learning. Once the child is entering your world of learning, it is like a horse which is being controlled and finding somebody who is loving doing something with it. You actually write the brain and thoughts of the student, but you have to allow him to do that. Otherwise, the child will start shrugging it off, will not open its ears or his or her mind to what you want to say. You will repeat, they will not listen. Even if they listen, they will not take it into themselves as part of their learning experience, which was natural to them when it was their absorbing of their mother tongue. तो अब क्या हो गया? टीचर बाधा बन गई, प्रिवेंट कर रही है लर्निंग को या लर्न करवाने में मदद कर रही है? Is she becoming an impediment to a reaction or a catalyst? These are big questions. Teachers have made students hate subjects. Teachers have made students hate subjects. Teachers have made students hate school. Teachers have made, I'm not accusing anybody. I'm speaking of a potential which is there where this kind of a process without even you wanting it can happen, and you might even not feel that the student is feeling like that. Students are delicate. Children go through a lot of things, specifically in our times now. They are being loaded with information. They are being addicted to the social media. They first see with the bent head in the mother's phone, and after that they develop a liking for Insta and other things which they see first in their mother's hand, and slowly it becomes an addiction. You as teachers are now facing a childhood which is totally at variance. बहुत ही अलग है उस चाइल्डहुड से जो आज से 20 साल पहले भी था. ये नया चाइल्डहुड है, ये नए बच्चे हैं, इनके हालात बदल गए हैं. कंज्यूमरिज्म, चीजों का इस्तेमाल 20 साल पहले 30 साल पहले उतना नहीं था, आज हो गया है. बच्चे चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, पढ़ने में कम दिलचस्पी रख रहे हैं. हो गया है क्योंकि चीजें उनको ज्यादा प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनकी नजरों को भाते हैं. अब ऐसी हालत में पढ़ाई को ले आना और उनको उस रास्ते पर, उस डगर पर चलाना इज समथिंग विच यू नीड टू डू थ्रू योर लव ऑफ लर्निंग. अगेन आई एम टेलिंग, योर लव ऑफ लर्निंग. आप अगर ठंडे हो गए सीखने में तो बच्चा सुकड़ जाएगा, ठिठर जाएगा, और उसका ठिठरावेपन, उसकी ड्वार्फिज्म का जिम्मेदार आपको अपने आप को करना पड़ेगा. ये सब चीजें गौर करने से आती हैं. पहले इंसान को यह देखना पड़ता है कि वो बना क्यों. अब बना अगर है पढ़ाने के लिए तो यकीनन पढ़ाने में सीखना, जैसा मैंने बोल दिया कि सीखने से सिखाना जुड़ा हुआ है और उसका आश्रय है. तो आप अगर टीचर बनने को अपनी जिंदगी का मकसद समझ रहे हैं, इफ यू कंसिडर द पर्पस ऑफ योर लाइफ टू बी अ टीचर, then you will start understanding your purpose better. अगर मजबूरी के तौर पर अगर आप स्कूल को जा रहे हैं, मजबूरी के तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो मैं कुछ भी कह लूं और सभी लोग कुछ भी कह लें, कुछ होने वाला नहीं है. अंदर से जब आग ही नहीं लग रही है तो रोशनी फैलेगी या नहीं फैलेगी? नहीं फैलेगी. पोटेंशियल है, रियलाइज हो रहा नहीं है. This is the problem that we are going to have, and this problem is getting multiplied.
बच्चों को अपना बनाना, दुनिया में अपनी दाखिल करना, अपने इल्म की दुनिया में, नॉलेज की दुनिया में लाकर उनकी परवरिश करना, और इस हालत में उनको छोड़ना कि वो निकलकर एनिमेटेड जाएं, पूरी जान के साथ जाएं टुवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग। उनके लर्निंग की ख्वाहिश को कुचलना नहीं है, उसको इतना ज्यादा बना देना है कि जब बच्चा आया था, आपने वो जो कैफियत पाई थी जाते वक्त आपकी क्लास से या आपके कोर्स से, वो बच्चे में आप पैल्पेबल डिफरेंस देख सकना, ऑब्वियस विजिबल देखना, ये पर्पस लेके चलना, नंबर्स में नहीं। बच्चे को देखकर बोलूंगी कि इसके अंदर ख्वाहिश पढ़ाने की और पढ़ने की, मेरी पढ़ाने की और उसकी पढ़ने की एट टैंडम साथ मिलके चले, और हमने इसको एक रिएक्शन बनाया और उस रिएक्शन ने नूर अफकन काम किया, नूर फैलाया। ये हर बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से आपको टारगेट बनाना पड़ेगा और वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप टारगेट ही नहीं बनाए, बोले एक एक बच्चे की तरफ हम तवज्जो करें, करना पड़ेगा। टीचर है तो करना पड़ेगा, और फिर ये आदत बन जाएगी। जो काम पहले मुश्किल नजर आएगा वो आसान दिखता जाएगा, और जब नेक नियति के साथ कोई आदमी काम करता है तो ऊपर वाले की मदद बहुत ज्यादा आती है। ऊपर वाले की मदद चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? तो वो आपकी शर्त पर आपकी मदद करेगा या उसकी अपनी शर्त पर मदद करेगा? आपकी शर्त पर मदद करेगा कि तू मुझे मेरी शर्त पर मदद कर, मैं तवज्जो नहीं करूंगी मगर तू मुझे बेहतरीन टीचर बना दे, मैं पढ़ूंगी नहीं मगर तू मुझे बेहतरीन टीचर बना दे। ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बिकम व्हाट ही वांट्स यू टू बिकम, एंड देन सी हाउ ही मेक्स नॉलेज फ्लो थ्रू यू, देन सी द चेंज व्हिच द चिल्ड्रन विल हैव, एंड दैट would be the biggest gift you will give to society, and in a way give it to yourself. It is a permanent gift which you will be giving yourself, and as you mature with the child, your family will also mature with you. आपके बच्चों में भी वही किस्म का चेंज आएगा जो आपने स्कूल में बच्चों में लाने की कोशिश की, तो आपके बच्चे भी उसी ढब में ढलते जाएंगे। इसकी फ्लिप साइड ये है, मत कीजिए तो अंधेरे में आप, अंधेरे में क्लास, अंधेरे में क्लास तो अंधेरे में बच्चे, बच्चे सीखने की जगह नहीं सीखना क्लास से सीख कर जा रहे हैं, बच्चे सीखने की जगह नहीं सीखना क्लास से होकर सीख कर जा रहे हैं, और आपके घर में भी फिर वही नहीं सीखने की परंपरा जारी रहेगी, और उसका नतीजा यह हो गया कि इल्म फैलाने वाले जहल के दीप जलाएंगे, बोल सकते हैं, या इल्म के दीप बुझाना शुरू कर देंगे। ये टीचर का प्रॉब्लम है। या तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और यू विल बिकम द प्रॉब्लम, टेकिंग डाउन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद यू डाउन instead of taking them up, and the impact would be something very, very bad. I'm telling you, there is darkness in the society. There is no doubt about it. There is darkness in the society. नूर, रोशनी आप ही लोग फैलाने वाले हैं। माँ बाप भी उमूमी तौर पर उतने पढ़े लिखे नहीं रहते हमारे पास, उमूमन, जनरली। तो आपको ही जिम्मेदारी करनी पड़ेगी कि उनका जिम्मा भी आपको लेना पड़ेगा। तो मोहब्बत लर्निंग से जो एक नेचुरल है उसको खाली आपको एक्सटेंड करना है। 2-3 साल में जो बच्चे की कैफियत होती है, द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द चाइल्ड एट द एज ऑफ 2 or 3, it should not be impaired. That flow needs to be taken and developed to a point that the child doesn't lose its willingness to absorb knowledge. उसकी जिज्ञासा कम नहीं होनी चाहिए, उसकी इल्म की प्यास कम नहीं होनी चाहिए। ये एक यार्डस्टिक है बच्चे की तड़प तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। जो नेचुरल है, जैसे दूध पीना है, हम उसको एक आर्टिफिशियल ढब में डालकर उसको दूर कर देते हैं। उसको उस नेचुरल तरीके पर बाकी रखकर, उसके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाकर, अपने तरफ से बिल्कुल एक कैटलिस्ट जितना काम कर कर, वी आर नॉट द मेन थिंग इन द टू things. No, the child's natural propensity to learn is being actually activized by us in a manner which is natural to it, and instead of allowing it to hit the impediments of society, you are trying to remove them. बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसको सोसाइटी का अंदाजा नहीं होता, जबान तेजी से सीखता है, लेकिन जैसे बड़ा होने जाता है सोसाइटी रुकावट बन जाती है लर्निंग के लिए।
सोसाइटी रुकावट बन जाती है लर्निंग के लिए। आपका काम वो रुकावटों का असर कम करना होता है, वो कम करते जाइए, बच्चा अपने नेचुरल फ्लो को डेवलप करता जाएगा, करता जाएगा। ओनस ऑफ लर्निंग इज नॉट ऑन यू, ओनस ऑफ लर्निंग इज ऑन द चाइल्ड। द ओनस ऑफ लर्निंग इज ऑन द चाइल्ड। उसको महसूस होना है मैं सीख रहा हूं, आपको महसूस नहीं होना है आप सिखा रहे हैं। मुश्किल बात है मगर करना पड़ेगा। मैं सिखा नहीं रही हूं, वो सीख रहा है। मैं फकत इंपेडिमेंट्स को दूर कर रही हूं, मैं फकत कैटलिस्ट बन रही हूं। हम इससे बढ़ के नहीं कर सकते, हम इससे बढ़ के नहीं कर सकते। मैं आपके सामने 4 बिल्लियों को बिठा दूं, उनको पढ़ाओ तो आप कहेंगे कि आप ही पढ़ाइए, हम जा रहे हैं। क्यों? कि बिल्लियां पढ़ती नहीं है, कुत्ते नहीं पढ़ते हैं। यू कैन ट्रेन देम एट द बेस्ट, ठीक है, यू कैन ट्रेन देम एट द बेस्ट, बट यू कांट टीच देम, राइट? Training is different from teaching. There is a story. Human beings also at times are trained as teachers are being trained. So there is a story. Once upon a time, there were two brothers, both were twins. They wanted to marry twin sisters. It was a long time back, right? Once upon a time. So what they did was they inquired here and there. There was nobody in their village who were twins and twin sisters. So they started searching, and in one distant place, village, they came to know there are 2 twin sisters of marriageable age. So they go there. But when they go there, they come to learn that they are very ill-tempered, both of them. Nasty girls. So, but they wanted to marry twin sisters, both of them were twins. So they agreed and married, despite the fact that they came to know that they were ill-tempered. बदमिजाज हैं बोल के उनको मालूम हुआ। और औरतें बेइंतहा कम रहता है कि बदमिजाज हो। सही बोल रहा हूं? Am I telling the right thing? बहुत ही कम होता है कि औरतें बदमिजाज हो। मगर बदकिस्मती से दोनों बदमिजाज थे, जो कि नहीं होना चाहिए, नेचुरली नहीं। तो ठीक है। What happened was, one brother after a few weeks tells the other कि the way we were informed, my wife is totally ill-tempered, badmizaj, but I see your wife, she doesn't seem to be like that. He says, yes, I am lucky. Yes, I am lucky. So he says, what is the meaning here? What lucky? He says, the first day when I entered my room, a cat entered along with me. And once the cat entered, it started meowing. I told her once, stop. She didn't. I pulled my sword out, and it was a long time back. So people used to carry sword the way they carry their wife's handbag these days, right? So he pulled out the handbag, sorry, the sword, right? I'm confusing the past with the present. So he pulled out his sword and cut the cat into 2 and said, no mewing from now on. That was my luck. From that day till this day, I have not heard any mewing at all. So he said, then I will also do the same. He said, no, the time of training is over. It has to be done on the first day. The good thing is, teaching is not like that. It goes for a long period of time, and obviously teaching is learning actually. So it's not teaching for the sake of teaching, it's learning all the way around. As there is a hadith from the Prophet, وَطْلُبُ الْإِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْلَهَدِ. Learn from the cradle to the grave. तो वो सिलसिला जारी रहेगा। तो ये ट्रेनिंग ऐसी कराना नहीं है, डराना नहीं है बच्चों को, तलवार खींचनी नहीं है, हैंडबैग उठाना नहीं है। अपने आप को पढ़ाई की हालत में डालना है, लर्निंग की हालत में डालना है। लर्निंग की हालत में जब आप जितना गहरे इन्वॉल्व होंगे, बच्चों पे एक मैग्नेटिज्म है, एक किस्म का मैग्नेटिज्म है, ठीक है। जितना मैग्नेट पावरफुल रहेगा, ठीक है, और मूव होता रहेगा। मैग्नेटिज्म की जो थियरी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, मैग्नेट अगर आप एक जगह रख दीजिए कुछ नहीं होगा, मैग्नेट को मूव करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसलिए कहते हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। मगर मैग्नेट एक जगह रहा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रो नहीं होती, इसको डायनोमो ये वो बोलते हैं हम लोग, जो भी करते हैं। तो आप लोग का काम है मैग्नेट बनना, और मैग्नेट ज्यादा शिद्दत का बनना, और उसके बाद मैग्नेट मूव होना। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप करंट जनरेट करेंगे, नूर जनरेट करेंगे, और वो बच्चों में जनरेट होगा, और फिर वो चीज फैलते जाएगी। क्लास वुड बिकम अ प्लेस ऑफ वर्शिप। और से सुनिएगा, क्लास वुड बिकम अ प्लेस ऑफ वर्शिप। व्हेन आई से वर्शिप,
I mean that state where you are above your normal daily condition. क्लास उसको बोलते हैं where you are above your normal daily condition. जो भी प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है, अगर नमाज में एक स्टेट आता है जो थोड़ा सा उसको एलिवेट करता है, that elevated state should be there in the class. It should move to that level, and from there on, then education will start. Otherwise, education will never start. I am being very, very open. Education will never start, leave alone reaching a point of fruition and giving benefit and causing the children to become real learners. It won't happen. So the duty is yours, the task is yours. You need to really push yourself up, bring yourself into that natural space, and then create a natural space in the class and make the class a part of heaven. ये नीयत से जाना, जहन्नम हम बनाते क्लास को, हेल हम बनाते क्लास को, ये लेकर जाना कि मैं जन्नत बनाऊंगी, अगर जहन्नम भी है तो जन्नत बनाऊंगी. बना सकते हैं? हो सकता ना? बगैर हैंड बैग या तलवार को इस्तेमाल करें. ठीक, तो ये उम्मीद आपसे रखते हुए कि यू वुड बी एबल टू डू दिस. कोशिश करो. शुरू में ये चीज बहुत ही अजीब दिखती जो मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं 60 साल पहले स्कूल को गया था. आई वॉज एडमिटेड इन नर्सरी इन द ईयर 1965. अब कितने हो गए? 60 साल हो गए. तो 60 साल से पढ़ते पढ़ते यहां तक आने के बाद ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये पॉसिबल है. आपकी एज में पॉसिबल नहीं आएंगे, इसलिए हम जैसे बुढ़ों को खड़ा करते हैं यहाँ पे, कुछ तो भी बोलो बोल के. ठीक है ना? तो इसलिए बोल रहा हूं कि 60 साल के तजुर्बे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, ये चीज पॉसिबल है. और अगर ये कर लिए तो जिंदगी भी अच्छी हो जाती, और जिंदगी के बाद भी अगर कोई जिंदगी है तो वो भी अच्छी हो जाती. थैंक यू वेरी मच.